हेलो हेलो इज इट रिकॉर्डिंग बस। तो आज मैंने बहुत दिन बाद बाई वीकली कॉन्टेस्ट दिया था एंड आई जस्ट completely fucked it. मेरी रैंक है 11,000. So I joined late as well, but like the third question, it was an easy question. ठीक है, मैं बेफालतू में पता नहीं क्या सोचे जा रहा था. And yeah, anyways, let's just solve the questions at least now. Oh, just give me a second. Okay. So the first question is weighted words mapping. You're given an array of strings words where each string represents a word containing lowercase letter, English letters. So all the letters are in lowercase, okay? So what we need to do is we have a list called words, okay? And we need to find the sum of this. और इसका sum हम लोग को निकालना है on the basis of this list, weight list. So for A के लिए 0th, right? तो A 5 हो जाएगा तुम्हारा, B तुम्हारा 3 हो जाएगा, and ऐसे ही so on. और उसके बाद जो भी टोटल सम आएगा उसको हम लोग मॉड्यूलस करेंगे बाय विद 26, जैसा यहाँ पे इसने किया है. मॉड्यूलस की वैल्यू आई 8 एंड नाउ दिस 8 विल बी द वैल्यू फ्रॉम द बैक. सो फ्रॉम द बैक व्हेन यू काउंट, तो फिर z की हो जाएगी 0 एंड a की हो जाएगी 25. ठीक है, वरना ऐसे नॉर्मली a is 0 and z is 25, right? So this is easy, ज़्यादा कुछ है नहीं. So let's just start it. Let's make a string for I and I and words. What's my name? तो मैं एक सम इनिशियलाइज करा देता हूँ 0 से यहाँ पे for ch and I. तो पहले अपने को वेट निकालना पड़ेगा. For that we need to get the character, है ना? I mean the index of the character from this list. तो उसके लिए we will just do 97, uh न- not 97, the ASCII value of that character minus 97, क्योंकि 97 होती है एक की तुम्हारी ASCII value, right? So your IDX will be ORDCH minus 97. And then we'll get the weight from here. IGN weights IDX. उसके बाद इस लूप से आ आएंगे. अब यहाँ पे ठीक है, नाउ वी हैव द वेट, तो हम लोग इसको मॉड्यूलस करेंगे, राइट? अब देखना है इधर थोड़ा सा. सो वी नीड टू मॉड्यूलस इट, राइट? तो मॉड्यूलस करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है, उसको हम लोग क्या रिवर्स से कैसे काउंट करेंगे? तो बेसिकली लेट्स से मॉडल्स करने के बाद जीरो आई, ठीक है, तो जीरो पे हम लोग को चाहिए जेड. नॉर्मली जीरो पे ए मिलेगा अपने को ना. तो लेट्स जस्ट सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम like 25, right? Whatever value we get from the modulus, we just subtract it from 25 and we get the index of that character, right? उसके बाद to get the character, we'll just add 97 to it to get the exact ASCII. Okay. So sum में let's do 25 minus, that's u modulus 26 plus equal to 97. S plus char car, and our car will be ASC ASCII of ch, not ch, SU. And then we just return S. Wait, what the fuck we are getting? How do you get the ASCII? मैं कुछ गलत कर रहा हूँ शायद से. Ah, not ASCII, man. CHR. Use char. Come on. Yeah, it's working. Submit. Accepted. ठीक है. Let's move on to the second question.
बहुत बेकार क्वेश्चन है यार ये। फालतू में मेरे को एक वो भी आ गई थी। ओके 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 ओके, आंसर नहीं दिखाना है। So you given an array of string words and an integer k. Two words A and B at distinct indices are prefix connected. If from A से K तक की वो string is equal to B से K तक की वो string, ठीक है? Connected group is a set of words such that each pair of words prefix is connected, ठीक है? Basically, जैसे these two words, ठीक है? तो इसमें K is 2. So we need like two characters, the first two characters to be same. तो यहाँ पे AP है, यहाँ पे भी AP है, so we got one, right? अब अगर यहाँ पे भी AP होता तो उसको हम लाइक एज अ डिफरेंट नहीं ट्रीट करते, वो भी एज अ सेम ही ट्रीट होता, ठीक है? मतलब एज वन ही ट्रीट होता। और फिर यहाँ पे BA है and यहाँ पे भी BA है, तो normally like what is the naive way to do it? You'll use two loops and you'll just compare the strings, right? And if we see this, तो words की length है 100 तक, K can be your 100 as well, and your like the list length of the list is 5000. So in the case, your every operation can go to like 5 into 10 to the power 3 into 10 to the power 2 into 10 to the power 2. That is 10 to the power 7, right? तो इस पे टीएलई तो आएगी ही आएगी अगर नॉर्मली करोगे तो। सो हाउ शुड वी डू इट? बेसिकली क्या तो कह सकते हैं कि हम लोग एक बार आइटरेट कर सकते हैं पूरी लिस्ट में, है ना? एंड लेट्स टेक एन एग्जांपल, लेट्स यूज दिस मैन। खुल जा। अबे यार क्या हो रहा है? Something went wrong. What the fuck went wrong, bro? I think I should pause it. Wait. Okay, खुल गया ये। 10:24 हो रहा है, मेरे को ये जल्दी करना है यार। 11 बजे तक ये डालनी भी है मेरे को। ओके, सो मैं क्या कह रहा हूँ कि लेट्स मेक अ डिक्शनरी। लेट्स आइटरेट वंस एंड मेक अ डिक्शनरी। तो हम लोग करेंगे क्या, लाइक वी केम अक्रॉस दिस वर्ड और हम लोग इसका पहले से ही निकाल देंगे AP, राइट? AP इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे आए, फिर से AP है, तो यहाँ पे +1 हो गया, ये 2 हो गया। BA, BA को डाल देंगे, BA की 1। यहाँ पे आए, फिर से BA हो गया 2। अब वैसे यहाँ पे कुछ और भी होता, एपेक्स होता लेट्स से, राइट? तो फिर यहाँ पे ये 3 हो जाता। अब हम लोग इसको क्या कहते हैं, वो कैसे करते हैं, टू गेट द काउंट्स। तो हम लोग ये डिक्शनरी में आइटरेट करते हैं, और जो जो इंडाइसेस पे हम लोग को ग्रेटर देन या इक्वल टू 2 वैल्यूज मिलती, उसको हम वहां पे हम लोग क्या कहते हैं, +1 कर देते काउंट में, राइट? दिस इज सिंपल, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी गोइंग टू डू। लेट्स मेक अ डिफॉल्ट prefix is equal to default। कोई भी यूज कर सकते हो लिस्ट वाली। स्पेलिंग सही है कि नहीं, आई डोंट नो। फॉर CHN, n is equal to length of words. We need length of words. For CH in that, we will get the indices from that. I don't think we need it. Uh, actually, it's for I in range n। तो ना जो वर्ड होगा, word will be words I। What am I doing?
and word will be first K. Acha, we need to check the length of this word as well. So if length of this word is greater than equal to K, तो हम लोग ये करेंगे, right? Oh, prefix वाली डिक्शनरी में इसको डाल देते हैं and we'll just initialize as a count with 0 and then for I n prefix dot values if I is greater than equal to 2 is equal to 1. Return count. Easy, right? तो ये इजी क्वेश्चन था, फालतू में थोड़ा सा उसमें वो वाला केस था। ओके, अरे यार, अनदर हाउस रॉबर प्रॉब्लम, ठीक है। So you're a professional robber planning to rob houses along a street. Each house has a certain amount of money stashed and is protected by the security camera. ठीक है? You're given two integer array nums and colors. So basically, we can't rob the houses which are adjacent and have same color here, but we can rob the houses which have same color but they are not adjacent. So let's इस पे आते हैं वापस से। अरे इस क्वेश्चन ने मुझे बहुत वो कर दिया था यार, फालतू में मेरा टाइम वेस्ट हो गया था। So let's say कि colors are like red, 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 red. So we can't rob these two, but we can rob this and this because these are not adjacent. Yeah. And similarly, we can rob these two as well. So you get the idea, right? So it's a simple DP problem. हाउस रॉबर जहाँ देखे डीपी है वो समझ लो। तो करना क्या है, लेट्स जस्ट थिंक ऑफ दैट, ठीक है। और ये हाउस रॉबर क्या होता है, मतलब हम लोग को हर एक स्टेज पे डिसीजन लेना है दैट वी नीड टू टेक दिस हाउस और नॉट, राइट। सो जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, 3, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स हाउस। तो एक तो सिंपली होगा तुम्हारा नो टेक, उसमें तुम स्किप कर जाओगे, तो स्किप में ये जो IDX है, IDX+1 कर दो सिंपली। एल्स अगर हम लोग टेक कर रहे हैं तो ये वैल्यू तो टेक कर ही लो। अब हम लोग को चेक करना है कि क्या कहते हैं इसके जो आगे वाला है, पहले तो चेक करेंगे कि IDX+1 एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं। अगर नहीं करता है तो क्या कहते हैं हम लोग सिंपल यही सिर्फ ये टिक कर लेंगे। अगर करता है तो हम लोग देखेंगे कि इसका कलर इससे मैच कर रहा है क्या। अगर नहीं कर रहा है तो हम लोग सिंपली सॉल्व प्लस में क्या कहते हैं सॉल्व में IDX+1 कर देंगे, राइट। क्योंकि हम लोग इसको भी ले लेंगे फिर, अगर ये मैच नहीं कर रहा है तो ऑब्वियसली। अगर करता है तो क्या करेंगे हम लोग IDX+2 कर देंगे। तो 1 से सीधा हम लोग 3 पे जंप करेंगे। अब 3 से मतलब नहीं है कि वहां पे कलर मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, कि वो दोनों तो एडजेसेंट नहीं है ना। तो सिंपल कोड लॉजिक यही है। मैंने फालतू में इसको ओवर कॉम्प्लिकेट कर दिया था सॉल्व करते टाइम। लेट्स जस्ट मेक p is equal to -1 into length of nums def solve IDX if IDX is greater than equal to length of nums, it's written 0, right? If dp of IDX is
is not equal to -1, then return the DPU. Find that. Then we return dp of idx. Now let's like write the code logic. तो पहले simply I plus 1. भाई क्या मैं टाइप कर रहा हूँ ये इसलिए तो skip में we'll do solve idx plus 1. We are not taking this out. I'm not taking. तो let's just initialize take as 0 क्योंकि इसमें कंडीशन लिखनी है. अब if idx plus 1 is less than, right, your length of nums, and let's get the current color as well. Current color is equal to colors idx, and colors idx plus 1 is not equal to the current color color. Then we do take me we take nums of idx. अब since color सेम नहीं है तो हम लोग आगे का भी take कर सकते हैं. So we'll do solve idx plus 1, right? अब elif idx plus 1 is greater than or equal to your length of nums. So just take the last like last idx, last index. So take में डाल दो nums of idx. अरे यार 7869 मेरे कीबोर्ड पे एक वो है लाइक लॉक स्क्रीन का बटन है उससे दबाने पे लॉक ही हो जाता है. एनीवेज elif. सो अब यहाँ लगे सिंपल है अगर करंट कलर सिमिलर है idx plus 1 कलर की. ठीक है. करंट कलर is double equal to your colors idx plus 1, right? Then we will take nums of idx plus solve nums, sorry, idx plus 2, है ना. हम लोग लाइक जंप कर देंगे जैसा मैंने इधर दिखाया था 1 से सीधा 3 पे सेम है तो. And then simple dp of idx will be max of take comma skip return dp of idx, and then we return solve 0. Yeah, it is working. तो इसमें पुरानी मतलब मैंने सबमिट तो किया ही नहीं था वरना मैं कोड दिखा था जो मैं पहले लिख रहा था. मैं पता नहीं क्या ही कर रहा था उसमें. ठीक है. मैं उसमें पूरा कोड लॉजिक हाउस ड्रॉप पे बनते ही बना रहा था और +2 किए जा रहा था फालतू में. सो या बेसिकली दिस इज द these three are the main cases of this question. Anyways, कितना टाइम हो गया? 12:35. I'll just upload this as it is.